Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, do you have in mind the truth table for D flip flop? So D flip flop में हमने देखा था that the next state will be, so when the present state is 0, the next state is 0, the present state is 1, the next state is 1. We have already seen this. Okay. So यहाँ पर एक्चुअली था क्या कि जो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप था, उस फ्लिप फ्लॉप में जो भी हमने जेके फ्लिप फ्लॉप देखा, उस जेके फ्लिप फ्लॉप में जे और के इनपुट्स को हम शॉर्ट करते हैं विथ अ नॉट गेट, तो हमें डी फ्लिप फ्लॉप मिलता है। लाइक कि जो हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप था, उस जेके फ्लिप फ्लॉप में हमने क्या किया था, सिंपली जो जेके इनपुट्स थे, उन जेके इनपुट को हमने एक नॉट गेट लगाकर शॉर्ट किया। ओके, सो दीज आर दी जे एंड के इनपुट्स, ये हमने शॉर्ट किया है और इसी को हम डी इनपुट नाम दे रहे हैं। और यहाँ पर जो हमें नेक्स्ट स्टेट मिलता है आउटपुट, वो हमें क्या मिलता है, दैट विल बी सेम। ओके, क्यों? क्योंकि जब जे का वैल्यू, जब हम डी का वैल्यू यहाँ 0 पुट करते हैं तो यहाँ 0 आता है और यहाँ 1 आता है। इसका मतलब क्या है, 0-1 वाला केस है, जेके का 0-1 वाला केस। तो फॉर दिस पर्टिकुलर केस हम क्या जानते हैं, जब जे 0 है और के 1 होता है, इन दैट केस द नेक्स्ट स्टेट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जे, दैट इज 0, सेट वाला कंडीशन। ओके, and in the second case when d is equal to 1, in that case this is 1 and this is 0. So in this case we will have j1 and k0. So j1 k0 के केस में हमें आउटपुट क्या मिलता है, that is equal to 1. Okay, so this is the truth table for jk flip flop. और अब हम यहाँ प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट टेबल देखते हैं। तो इन द प्रेजेंट स्टेट वी विल हैव अ 0, the input also we are taking as 0. Okay, so for this case what will be the next state, प्रेजेंट स्टेट 0 है और डी इनपुट 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट हमें क्या मिलेगा, कोई बताएंगे? नेक्स्ट स्टेट हमें क्या मिलेगा? नेक्स्ट स्टेट भी 0 ही मिलेगा, क्योंकि अभी तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि जब डी 0 होगा, इन दैट केस द नेक्स्ट स्टेट और द qn plus 1 will also be, so this is qn, this is qn plus 1, next state is qn plus 1. Okay, so the whatever be the present state, if d is 0, the next state will be 0. In the second case, the present state is 0, d input is 1. So for this case, what will be the next state? The next state will be equal to the input d value, whatever is the present state, the next state will be equal to 1. In the next case, when the present state is 1, d input is 0, for that case we will have, so what will be the output or the next state for this case? Can anybody tell me? 0. So it should be a 0. So where all things are gone. Okay, so this should be a 0, because for the d input
whatever be the present state, the next state will be a 0. Next, we will the present state as 1, D input as 1. In that case, the output or the next state will also be equal to 1 because D is 1. So delay flip-flop, this is known as the delay flip-flop. Because why? Because after some delay, we are getting the same output, whatever the input is given. Okay. So based upon this present state, next state table, we can find out the excitation table. Okay, of D flip flop. So excitation table में हमें क्या मालूम होता है? हमें present state मालूम होता है, next state मालूम होता है. Based upon this present state and next state, we will have the excitation input. Okay. Which is D for this case. So the present state is 0, next state is 0, present state is 0, next state may be 1, present state is 1, next state may be 0, present state is 1, next state is 0. So for this case, we already know that. So when the present state is 0 and we want next state as 0. So the present state is 0 and the next state we want as 0. So in that case, the D should be 0. So D should be 0. In the second case, when the present, we need the present state as 0, next state as 1. So in this case, what should be the D input? Present state as 0 and next state 1. We need 1 at the D input. Okay. Present state is 1, next state 0. Present state 1, next state 0. यहाँ पर क्या होगा? नेक्स्ट स्टेट हमें 0 चाहिए. नेक्स्ट स्टेट अगर हमें 0 चाहिए तो डी इनपुट पे 0 ही देना होगा. नेक्स्ट वी हैव 1 1, that is next state is 1. So if we want next state as 1, the present state or the input should be a 1. So D flip flop जो है, this is quite simple to draw. The excitation table or the excitation inputs. So based upon these tables, we can find out the characteristic equation. So the characteristic equation for this is found by taking the inputs as D and Qn. Okay, so characteristic equation. So how we can find out the characteristic equation? So for finding out that characteristic equation, we need a flip-flop. We need a K-map, and in this K-map, what we have, the inputs as Qn and D. Based upon this, at what positions for Qn 0? So here we have a 0 1 0 1. The combination यहाँ पे क्या बन रहा है? 0 0. यहाँ combination बन रहा है, we will have a 0 1. यहाँ जो combination मिल रहा है, that is 1 0, and here we will have a 1 1. तो यहाँ पर हम देख लें कि present state, based upon the present state and next state table. Yes, यहाँ से देखें तो हमें क्या दिख रहा है, that for this case and this case, we will have the values 1. So 0 1, 0 1 is here, and 1 1. So 1 1 is here. So we will have this combination. So from this combination, what we can find out, the excitation input or the next state will be equal to the, so here vertically जब हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, D. So next state will be equal to D. Okay, so this is the characteristic equation for D flip-flop. So based upon
this present state, next state table, we can also draw the state diagram also. Okay. So आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग इसको देखिए अच्छे तरीके से, क्योंकि ये जो है ये this is the basic for your next topics. Okay. So is there any question? Is there any question? No, sir. नहीं सर। Okay, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। Thank you.